Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students, today we will explore the facts about the entitled theme Principles of Classical Conditioning Theory. As we know that classical conditioning theory is propounded by Ivan Pavlov. Ivan Pavlov was basically a Russian-born physiologist who was working on digestive glands. I mean to say you secretion of digestion glands. And finally he propounded the theory which is known as classical conditioning theory. Dear students, as we know that conditioning simply means some sort of habit formation. यानी कि जब हैबिट फॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है तो उस स्टेट या प्रोसेस को कंडीशनिंग कहते हैं. अगर कोई स्मोकिंग नहीं करता है लेकिन जब हम उसे स्मोकिंग के साथ एक्सपोज करते हैं एंड ऑटोमेटिकली हैबिट फॉर्मेशन डेवलप्स इन एन इंडिविजुअल और वो चैन स्मोकर बनता है. अगर कोई चोरी नहीं करता है लेकिन जब हम उसे बार बार चोरी की ट्रेनिंग देते हैं, टाइम कम्स व्हेन द पर्सन बिकम्स थीफ. सो दिस इज नोन एज कंडीशनिंग. डियर स्टूडेंट्स, कंडीशनिंग इज नथिंग. इट इज सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ द हैबिट्स. Now question arises how the conditioning develops in an organism. Dear students, the conditioning develops by means of stimulus. When we will look through the prism of classical conditioning theory, it is the stimulus which plays important role in order to develop the habits in an organism. Dear students, as we know that there are the two types of learnings. One learning is known as S type of learning and second is known as R type of learning. S type of learning is the learning of Ivan Pavlov, while as R type of learning approach is given by the B.F. Skinner. Why this is called S type? S type means focuses onto the stimulus, while as in R type of learning focuses on to the response. It means stimulus is primary in Ivan Pavlov's classical conditioning theory, while as response is primary in operant conditioning theory. I mean to say you in B.F. Skinner's approach. Dear students, it is basically the stimulus as per the Ivan Pavlov which help us to develop the habit formation and finally leads an organism in the state of conditioning. Without the stimulus, neither conditioning is possible nor learning is possible as per the Ivan Pavlov's conditioning. Dear students, S type of learning is also known as respondent conditioning. Respondent conditioning is that type of conditioning in which responses are elicited in the presence of known stimulus. यानी कि response जो है वो known stimulus पे depend है. Without the known stimulus, we cannot get the responses. On the other hand, our type of learning is known as operant conditioning. It means the responses are emitted in the absence of known stimulus. इसीलिए
पेवलोनियन कंडीशनिंग में स्टिमुलस जो है वो प्राइमरी है और स्टिमुलस का होना जरूरी है. विदाउट द स्टिमुलस वी कैन नॉट गेट द रेस्पॉन्सेस. But while as in case of BF signals or type of conditioning, response is mandatory, but stimulus is not necessary. Without the stimulus, we can get the responses. For example, अगर मुझे हाथ को खड़ा करना है, इसके लिए मुझे स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है. अगर मुझे खेलना है, तो खेलने के लिए मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे पहले स्टिमुलस दिखाओ फिर मैं खेलने के लिए चला जाऊंगा. इट मीन्स ऑर्गेनिज्म इज एक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ वन्स ओन इनिशिएटिव्स. ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस. नाउ डियर स्टूडेंट्स, we will discuss major principles of classical conditioning theory. The theory is based on certain principles. As we already discussed, principle simply means well-established law or rule. It means in order to perform the task, or simply we can say that for the sake of learning, we have to follow certain rules. We have to follow certain norms. Without following the norms or rules and regulations, the learning cannot take place. Dear students, now we will focus on major principles which are involved in the classical conditioning theory. Number 1, principle of extinction. Principle of extinction is the primary, I mean to say you, first principle involved in the classical conditioning theory. As dear colleagues, we know that extinction simply means non-occurrence of the responses. यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स नहीं देता है तो उस स्टेट को हम कहते हैं एक्सटिंक्शन. डिसअपीयरेंस ऑफ द रेस्पॉन्सेस बेसिकली नोन एज एक्सटिंक्शन. नाउ क्वेश्चन अराइजेस हियर, कब एक ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स देना बंद करता है? किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म स्टेट ऑफ एक्सटिंक्शन में पहुंच जाता है? Dear students, as we know that Ivan Pavlov has conducted the classical experiment. तो उस एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन डॉग था. जब उसने डॉग को एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में रखा तो एक बार एक्सपेरिमेंट के दौरान एवन पेवलो हैज गिवन ओनली कंडीशनड स्टिमुलस in the form of ringing bell. तो डॉग ने रेस्पॉन्स दिया, लेकिन कंडीशनल स्टिमुलस के साथ एवान पेवलो ने अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं दिया, आई मीन टू से यू फूड. तो दूसरी बार एवान पेवलो ने खाली कंडीशनल स्टिमुलस दिया विदाउट द अनकंडीशनल स्टिमुलस, आई मीन टू से यू फूड. तो डॉग ने फिर से रेस्पॉन्स दिया. तो थर्ड टाइम भी कंडीशनल स्टिमुलस दिया विदाउट द अनकंडीशनल स्टिमुलस. तो आहिस्ता आहिस्ता डॉग जो है उसने भी रेस्पॉन्स स्लो किए. एंड टाइम केम व्हेन रेस्पॉन्सेस कंप्लीटली डिसअपीयर इन द डॉग. फिर आइवन पेवलो एज एन एक्सपेरिमेंटर कंडीशनल स्टिमुलस देता था लेकिन डॉग रेस्पॉन्स नहीं देता था. सो इट मीन्स द डॉग हैज लेड इन द स्टेट दैट इज नोन एज एक्सटिंक्शन, यानी कि डिसअपीयरेंस ऑफ द रेस्पॉन्सेस. और वी कैन से दैट व्हेन ऑर्गेनिज्म स्टॉप्स टू गिव द रेस्पॉन्सेस इज नोन एज एक्सटिंक्शन. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अब इसे एजुकेशनल प्रिज्म से देखेंगे, एक लर्नर कब रेस्पॉन्स नहीं देता है,
किस तरीके से एक लर्नर का जो बिहेवियर है वो एक्सटिंक्शन स्टेट में पहुंच जाता है। जब एक टीचर एक लर्नर को पढ़ाता है या लर्नर्स को पढ़ाता है, लर्नर सही जवाब सवाल का देता है, इट मीन्स लर्नर इज परफॉर्मिंग द टास्क्स, फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। वो हर कोई काम अच्छे ढंग से करता है, लेकिन जो टीचर है उसका बिहेवियर पैसिव है, कोई रिवॉर्ड नहीं देता है, एनकरेजमेंट नहीं देता है, बच्चे को ग्रेड नहीं देता है, यानी कि देयर इज कंप्लीट पैसिव बिहेवियर फ्रॉम द टीचर्स साइड, एंड सच a type of situation will lead the learner in the state of extinction। अब लर्नर में डिमोटिवेशन हो जाएगी, लर्नर फिर टास्क परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट नहीं हो जाएगा। दैट इज वाई टीचर हैज टू बी वेरी मच cautious that learner should not lead in the state of extinction। Number second, principle of spontaneous recovery। एक्सटिंक्शन के बाद spontaneous recovery आती है। Spontaneous recovery is never before the extinction, it comes after the extinction। Now what is spontaneous recovery? Dear students, spontaneous recovery simply means reappearance or reoccurrence of the responses is known as spontaneous recovery। जब हम फिर से एक ऑर्गेनिज्म में रेस्पॉन्सेज रिजेनरेट करेंगे या एक ऑर्गेनिज्म में फिर से रीअपियर रेस्पॉन्स हो जाते हैं, तो उस स्टेट को कहते हैं या उस कंडीशन को कहते हैं spontaneous recovery। Dear students, Evan Pavlov has conducted the experiment on dog। जब एक डॉग कंप्लीटली एक्सटिंक्शन स्टेट में पहुंचा था, यानी कि वो अब रेस्पॉन्स नहीं देता था कंडीशनल स्टिमुलस पे, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एवन पेवलो ने फिर से इसे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में रखा, आई मीन टू से यू लर्निंग सिचुएशन में रखा। तो एवन पेवलो ने अब कंडीशनल स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ रिंगिंग बेल दिया, तो डॉग ने धीरे से रेस्पॉन्स दिया, एंड एवन पेवलो हैज गिवन द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड। तो अब दूसरी बार कंडीशनल स्टिमुलस दिया, तो उस वक्त डॉग ने क्विक रेस्पॉन्स दिया और साथ में एक्सपेरिमेंटर ने रिवॉर्ड भी डॉग को दिया। तो थर्ड बार कंडीशनल स्टिमुलस दिया, तो डॉग ने उससे भी ज्यादा क्विक रेस्पॉन्स दिया। धीरे 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 एक ऐसा टाइम आ गया when complete responses has regenerated and reappear in the dog, so this type of state is known as spontaneous recovery। Dear students, हम नटशल में ये कह सकते हैं कि जब एक्सटिंक्शन के बाद हम फिर से रेपियर या रिएकर रेस्पॉन्सेज एक ऑर्गेनिज्म में करेंगे, तो उस स्टेट या स्टेज को कहते हैं spontaneous recovery। Now dear students, we have to find the significance of spontaneous recovery in the field of teaching and learning। जैसे कि हम सब जानते हैं, when the learner led in the state of extinction, it means the learner is not giving responses। तो हमें क्या करना चाहिए? तो टीचर को उस सिचुएशन में फिर से लर्नर को लर्निंग सिचुएशन में डालना है। जब भी लर्नर कोई टास्क परफॉर्म करेगा, तो उस वक्त एक लर्नर को टास्क परफॉर्म करने में रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए। जितना कि हम रीइंफोर्समेंट का यूज करेंगे, एनकरेजमेंट का यूज करेंगे, या हम लर्नर को ग्रेड्स देंगे,
उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी, लर्नर में मोटिवेशन बढ़ जाएगी और लर्न करने की। नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, principle of stimulus generalization simply means when a particular response elicited by a particular stimulus becomes also elicited by other similar stimuli। यानी कि जब हम एक स्टिमुलस से जो हमें रेस्पॉन्स मिलता था और हम वही रेस्पॉन्स दूसरे सिमिलर स्टिमुले से भी हासिल कर सकते हैं। So this mechanism or process is known as stimulus generalization. Dear students, for example, if the dog has given the bite to the child, अगर किसी कुत्ते ने एक बच्चे को काटा है तो कुत्ते के काटने से बच्चे में फियर प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब वो बच्चा किसी और डॉग को भी देखता है तो वो भाग जाता है और उसमें फियर प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, जब एक टीचर बच्चे को पनिशमेंट देता है तो ऑटोमेटिकली बच्चे में फियर पैदा हो जाता है। अब दूसरा टीचर क्लासरूम में आया तो ऑटोमेटिकली उस टीचर के आने से भी बच्चे में फियर पैदा हो जाएगा, बिकॉज चाइल्ड विल इवैल्यूएट, पहले टीचर ने मुझे पनिशमेंट दी है और जो दूसरा टीचर आया है ये भी टीचर है, ये भी मुझे पनिशमेंट देगा। इस तरीके से कि वो जनरलाइज करेगा हाउ वन सिमिलर स्टिमुले प्रोड्यूसेस द सेम अदर रिजल्ट्स। So this process is known as stimulus generalization। या एक बच्चा जो है जो खरगोश को देख के डर जाता है, अगर हम उसे खरगोश की टॉय दिखाएंगे, रैबिट की टॉय सिर्फ दिखाएंगे, तो उस वक्त भी उसमें फियर पैदा हो जाता है। दिस इज नोन एज स्टिमुलस जनरलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, रॉन्ग जनरलाइजेशन शुड ऑलवेज डिस्करेज। हमें रॉन्ग जनरलाइजेशन को डिस्करेज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द चाइल्ड हैज लर्नड cow is the big animal, it has 4 legs and a big tail। ये कॉन्सेप्ट बच्चे ने सीखा है। गाय एक बड़ी जानवर है, इसमें 4 टांगे और एक लंबी सी दुम होती है, और यही बच्चा जो है वो परसीव हॉर्स को करता है या कुत्ते को करता है। तो हॉर्स को देख के वो कहता है काऊ, क्योंकि वो हॉर्स में भी 4 टांगे देखता है, एक लंबी सी दुम देखता है। सो दिस टाइप ऑफ जनरलाइजेशन शुड बी डिस्करेज्ड। एट दैट टाइम वी हैव टू मेक ए चाइल्ड फेमिलियर देयर आर द अदर कंडीशंस which distinguishes one organism from the another organism। Now, principle of discrimination। Dear students, this is another important principle which is known as principle of discrimination। Principle of discrimination simply means when we are able to differentiate between two stimuli and give the correct response to the right one। जब हम 2 सिमिलर स्टिमुले के दरमियान डिफरेंस निकालेंगे और हम रेस्पॉन्स देंगे राइट वन को, दैट स्टेट और प्रिंसिपल इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, रेड लाइट वर्सेस ग्रीन। डॉग का बिहेवियर ट्रेन किया गया था टू गिव द रेस्पॉन्स ऑन ग्रीन लाइट, क्योंकि डॉग को फूड मिलता था ग्रीन लाइट के साथ, और डॉग का बिहेवियर आल्सो ट्रेन किया गया था टू डज नॉट गिव द रेस्पॉन्स व्हेन देयर इज रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट जलने पे, लाल बत्ती जलने पे जो डॉग था उसे फूड
नहीं मिलता था। इसीलिए डॉग ने कंप्लीटली सीखा था कि जब ग्रीन लाइट होती है तो फूड मिलता है, जब रेड लाइट होती है तो फूड नहीं मिलता है। और एक्सपेरिमेंटर जब एक समय ग्रीन लाइट भी दिखाता था, रेड लाइट भी दिखाता था, तो एट दैट टाइम डॉग डिस्क्रिमिनेट्स और डिफरेंशिएट्स बिटवीन टू डिफरेंट स्टिमुले। हाउ ग्रीन लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेड लाइट। तो डॉग जो था वो ग्रीन लाइट को रेस्पॉन्स देता था और रेड लाइट को रिजेक्ट करता था। दिस स्टेट और कंडीशन इज नोन एज discrimination. Dear students, we have to also find the applicability of discrimination in the field of teaching and learning. बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि किस तरीके से आप डिफरेंट कॉन्स्ट्रक्ट्स ऑफ नॉलेज में डिफरेंशिएट करोगे, डिस्क्रिमिनेट करोगे। किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट होता है दूसरे कॉन्सेप्ट से। उमूमन जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं तो बच्चे को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए हाउ वन ऑप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर ऑप्शन। सो दिस स्टेट और प्रिंसिपल इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। और एक बच्चे में कंप्लीट डिस्क्रिमिनेटरी सेंस डेवलप करनी चाहिए, किस तरीके से वो किसी भी एक चीज को दूसरी चीज से डिस्क्रिमिनेट करता है। ये टीचर की जिम्मेदारी है, किस तरीके से वो दो चीज़ों में फर्क जानेंगे, किस तरीके से वो डिफरेंट यानी कि थिंग्स में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, किस तरीके से एक चीज़ जो है वो मुख्तलिफ है दूसरे चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल मैंगो भी फ्रूट है, एप्पल भी फ्रूट है, लेकिन बच्चे को हमें सिखाना है हाउ मैंगो एज ए फ्रूट इज डिफरेंट फ्रॉम एप्पल, how apple is different from banana, how banana is different from grapes, how grapes are different from oranges, so on and so forth. तो हम नटशल में कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैज वाइडर एप्लीकेबिलिटी इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहिबिशन. Principle of inhibition simply means when the hindrance comes in the way of learning is known as inhibition. हम दूसरे मायने में कह सकते हैं कि any impediment or obstruction when comes in the way of learning is called as inhibition. यानी कि जब एक रुकावट लर्निंग के दरमियान आती है तो उस स्टेट को हम कहते हैं inhibition. Dear students, there are two types of inhibitions. One inhibition is being called external inhibition and second inhibition is being called internal inhibition. Now what is external inhibition? Dear students, external inhibition is that very inhibition which is created by the external factors. And this is some sort of environmental inhibition. यानी कि जब एक इन्वायरमेंट ब्लॉक्स खड़ा करता है लर्निंग के दरमियान, इम्पीडेंट्स खड़ा करता है, हसल्स एंड बसल्स खड़ा करता है, so we can say that when the obstructions are due to the environment or external factors, so that type of inhibition is known as external inhibition. For example, noise. Noise जो है ये external inhibition में आता है क्योंकि एवन पेवलो को डॉग को कंडीशनल स्टिमुलस रिंगिंग ऑफ द बेल और रिंगिंग ऑफ द बेल के साथ वो कोई और साउंड प्रोड्यूस करता था, जिसकी वजह से डॉग को डिस्क्रिमिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि ये रिंगिंग ऑफ बेल का बजर बजता है या किसी और चीज का, उसे वो साउंड सुनाई नहीं देता था. सो दिस इज नोन एज आई मीन टू से यू एक्सटर्नल इनहिबिशन. या लाइटनिंग, अगर हम ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलस दिखाएंगे लेकिन लाइट जो है वो बहुत कम रखेंगे तो उस सूरत में भी यानी कि बहुत मुश्किल होता है स्टिमुलस को जज और
रिकॉग्नाइज करना. सो वी कैन से दैट लाइटनिंग इज एक्सटर्नल इनहिबिशन. स्मोक या ज्यादा धुआं होगा तो ये भी एक फैक्टर है एक्सटर्नल इनहिबिशन का. या टेम्परेचर मीन्स कि तापमान का बढ़ना या कम होना. जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमें कोई भी टास्क करना है तो मॉडरेट टाइप ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए. पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज चिल, एक्सट्रीम चिल, तो चिल में हम काम नहीं कर पाते हैं. सो वी कैन से दैट इट इज द एक्सटर्नल इनहिबिशन. आई मीन टू से यू एजेंट ऑफ इनहिबिशन. And apart from it, fear of the teacher. It means it is also, or it also comes in the domain of external inhibition. Dear students, जब एक लर्नर को फियर पैदा हो जाता है एक टीचर से या टीचर कम्युनिटी से, सो लर्नर इज नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न. उसकी लर्निंग उस वक्त सही नहीं हो जाती है जब एक बच्चे में टीचर की वजह से फियर पैदा हो जाएगा. नाउ अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इनहिबिशन देयर इज इंटरनल इनहिबिशन. इंटरनल इनहिबिशन इज दैट इनहिबिशन which is arising due to the internal forces, or we can say that the inhibition which arises within an organism, जो ऑर्गेनिज्म ही में पैदा हो जाती है, और उस इनहिबिशन को कहते हैं इंटरनल इनहिबिशन. फॉर एग्जाम्पल फैटिग. जब एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बीमार पड़ता है या उसे कोई पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में बीमारी की सूरत में वो लर्न नहीं कर पाता है, वो टास्क नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर हिंड्रेंस बनती है पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर. ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल. अगर कोई इंडिविजुअल अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल पीने से डायरेक्टली ब्रेन केमिस्ट्री पे असर होता है. हंगर से आल्सो, यानी कि अगर कोई भूखा होगा तो भूख में एक इंडिविजुअल लर्न नहीं कर पाता है. सो वी कैन से दैट इट इज इंटरनल इनहिबिशन. एंड अपार्ट फ्रॉम इट sleep also comes in internal inhibition. This was all about today's lecture. If you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.